Good morning, students. We do now in the last class we have discussed about the inverse of a matrix. Okay, so as I given A inverse is equal to 1 by the determinant value of A, then adjoint of A. So जेकोसी मैट्रिक्स रो हमें इनवर्स बाहर कर परिया. By knowing the inverse you can solve the matrix. Solutions हम बाहर करिया थिला. In the last class I have given you have to solve the equations, linear equations by matrix inverse method. बर्तमान हमें इनवर्स बाहर करिया जानि सारिले हमें सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड केमति हबो बर्तमान हमें देखबा. सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ linear equations by matrix inverse method. Okay, so हमको एठी पूरा सिस्टम का दे देथिबो ताको हमें लीनियर इन इक्वेशन जाको मैट्रिक्स को कन्वर्ट करबा, then we will have the solution. This is the procedure. Suppose these are the equations were given to us. x1 x2 x2 2n xn b2 am1 x1 am2 amn. So these are the equations. You have to solve. First of all you have to find the matrix A matrix ना हमको दरकार. Matrix A था इसी the coefficients of your unknown variables. Matrix A का कार्य आपको coefficients of unknown variables. इटा a11 a12 a13 dot 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 a1n a21 a22 a23 dot 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 a2n. Similarly you have a m1 a m2 a m3 dot 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 a mn. Okay, this is your matrix A. Normally is your m by n. Second, one thing you should remember that is matrix B हमको दरकार. B matrix का जो is equal to potential, which will be normally a column matrix B1 B2 dot 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 Bn. Okay, and the unknown variables. This is your x, which is also a column matrix. Okay, so इजी हमरो एटा मध्य गोटे column matrix हबो, so that हमें आपको हमरो accordingly हम सॉल्यूशन रे लिखि परबा. राइट, बुझा पड़िला. Okay, so here you have the linear equations. आपको हमें केमति सॉल्व करिया by using our the formula x is equal to, but you can say a into x is equal to your b, therefore x is equal to a inverse of b, where x is equal to a inverse, that means
1 by determinant A adjust into your P. This will be your final answer. Okay, write down this one. Okay. Now we do one example so that हमें solve कर दे पाएगा x, y, z or x1, x2, x3 whatever may be the values. Remember A, the coefficient matrix, coefficient of unknown variable x1, x2, x3 dt dot dot dot. B, the जो is equal to थी वो theta and x का x1, x2, xn and here you have to find the determinant and adjoint, then multiply with b, you will get your answer, right? Okay. Now we go for solution. Solve the system of linear equations by matrix method or matrix inverse method. Okay, so the equations are x1 plus x2 plus x3 is equal to 4, 2x1 minus x2 plus 3x1 is equal to 1, 3x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 1. Okay, so these are the equations you have to solve it. So first of all you have to find a x b. A according to question, A is according to question, this is your according to question, A is equal to 1 1 1. এটা আমরা ম্যাট্রিক্সটা 2 minus 1 3 3 2 minus 1. B which is a column matrix, it is the name of 4 1 1 and x. It is তিনটা unknown variable আছে x1 x2 x3. So these are the three things we are getting from your question. Okay, so as we know that a x is equal to b or implies x is equal to a inverse of b, so we have to find a inverse. So before going to a inverse we have to just first find a determinant a. One thing you should remember, এটা কলা বেলে determinant a रो value टा important. If determinant a becomes 0 हमको आगे proceed होगा दरकार नहीं. Okay, first of all determinant a, that is 1 1 1 2 minus 1 3 3 2 minus 1. Solve it. 1 direct पकड़ी होची minus 1 into minus 1 1
minus 6, then this one minus 1, minus 2, minus 9, then plus 1, 2 2 are 4, plus 3, okay, which is equal to minus 5, minus 11 plus 11 plus 7, 11 7 18, 18 ରୁ 5 ଗଲେ we are getting 13, not is equal to 0. So it is 0 ହେଲା ନାହିଁ, then we can proceed for further. A determinant काढला ପରେ हमको not a cofactor काढिବାର ଅଛି. Okay, so whenever you have the determinant value, after that जदि 0 आसिला तापर proceed हो, 0 आसिला then you माने से stop हो जाए. Okay, okay, write down this one. Now we go for cofactors. These are continuous. हमें आपरे एटा कंटिन्यू करो. ओके, cofactors. First of all, C11, it is a cofactor. Okay, so 1 minus 6, that is your minus 5, C12. Okay, C12, it becomes it is equal to your minus 2 minus 9, that is minus 11. One thing you should remember, it 1 2 is जिसमें negative. I have already discussed all about it. Then C13 is equal to 2 to the 4 plus 3 7. Okay, then C21 0 1 into minus 1 minus 2, which is equal to plus 3 रे माइनस साइन एथि में एला 2 plus 1 3 एला जेते बेले ऑड होतबो ए दिटा मिसेला बेले गोटे माइनस साइन होतबो जेते बेले इवन होतबो किछि साइन रहबो. ओके, C22 एटा इवन होछि हमर सेति में किछि साइन रहबोनी. सो एटा दिबो minus 1 minus 3, that is minus 4, then this one C23 235 होछि जे माइनस साइन रहबो. ओके, एटा दिबो 1 2 2 minus 3, that is 2 minus 3 minus 1 अब already minus अछि. So एटा then C31 314 होछि पॉजिटिव हो, एटा गला minus 3, then minus plus 1 into, that is minus 2. Okay, this is minus 3, then plus 1. So here it is 3 plus 1 4, it is minus sign 3. Okay, 3 plus 1 4, right? Then C32 it is 3 3 5 वाला minus एटा गला 3 minus 2, that is minus 1, then C33 is your एटा गला minus 1 minus 2, this is your minus 3. Okay, these are the 9 cofactors. Then the cofactor matrix is equal to एटा को हमें लिखिबा. Write down all these cofactors. Okay, then we will go.
दिस विल बी प्लस 1 आगे माइनस अच्छी प्लस 1 okay, it will be 2 minus 3. Okay, now the covector matrix. कितने हुआ -5 11 7 3 -4 1 4 -1 -3, therefore adjoint A, this is your transpose of this one, रो ट्रांसपोज कर देंगे -5 11 7 3 -4 1 4 -1 -3. Okay, this is your adjoint of A. Okay, now determinant A will get inverse of A. A inverse is equal to A edge of A. एटा हमर 13 आसी ओटा को एबे दोची A inverse is equal to 1/13. This one -5 3 4 11 -4 -1 7 1 7 1 -3. Okay, okay, then we'll go for product. एक फॉर्मूला देख के हमें A inverse B की गुणी दबा. Now x is equal to A inverse into B. x को ले हमारा x1 x2 x3 A inverse को ले 1/13. एक 13 तक भीतर को लबा नहीं तो बाहर ही रखिबा सो दैट हमको हेल्पफुल हो. -5 3 4 11 -4 -1 and 7 1 -3 B. Okay, so B टा हमरो एची रही गला 4 1 1. Okay, now you have to multiply this one. एटा हमको गुणिया पड़ियो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस -4 into 5 -5 into 4 -20 plus 3 plus 4. Okay, then 11 4 ja 44, then -4, then -1, 7 4 ja 28 plus 1 -3. Okay, it's a good column sala. Next column -5 into 4. Right? So what we will get? Another column matrix x1 x2 x3 is equal to 1/13 -20 plus 7
that is minus 13, it is 39, and this becomes 29 3 26. So which is equal to minus 13 by 13, ये 13 का मैं भितर को नहीं जुआ, 39 by 13, then 26 by 13. Therefore x1, x2, x3 is equal to it is minus 1, 3, 2. Hence the solution x1 is equal to minus 1, x2 is equal to 3, x3 is equal to 2. Okay, this is the final solution. So it is a complete procedure. By this procedure we can solve our university exam ले through almost सब बेले गोटे आसुची आमे एटा आंसर का आसिला परे आमे चेक भी कर परिया whether our answer is right or wrong. पर चेकिंग काई आमे जदी चेकिंग कर दो आमे कंफर्म नहीं दिबा एटा चेक का ओके चेक का कंपल्सरी नो एटा आमो पे फॉर our general knowledge हमें जानिबा पाई whether our answer is right or wrong हमें जानिबा पाई एटा हमें लिखि परियो कोन करिया जो इक्वेशन ता देख x1 x2 plus x3 is equal to 4 2x1 minus x2 plus 3x3 is equal to 1 and 3x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 1. 8 तीन टा को 8 कर दो 3 into 5 को 6 6x1 एटा cos दिगला plus 2x2 एटा भी कटला plus 3x3 is equal to 6. हमें वैल्यू तीन टा पके दबा ताले हमें आंसर का भूल भी ठीक जाना पड़ेगा. ये 6 जदी आसी वाला 6 into -1 2 into 3 3 into 2 minus 6 plus 6 plus 6 which is equal to 6. हमरा RHS आसी वाला इट इज LHS नहीं therefore our answer is correct. Okay, so this is extra तमे निजे जाने पे एटा को देली so that you will get your answer right. So this is all about your procedure. So a procedure remember a x b आनिबो then a inverse आनिबो a inverse b गुणिले हमें x वैल्यू बाहर मोटे सेकंड ऑर्डर रो कर देबे छोटी अटे तो हम के हबो मो आर क्लास नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस वन. ओके मो आगोटे छोटी अटे कर दो छी राइट ऑल दिस थिंग्स. ओके now solve by inverse method. Okay, now x1 plus 2x2 is equal to 3 and 2x1 minus 3x2 is equal to minus 1. Okay, these are the two equations we will have. You have to solve by matrix method. So matrix method में first of all a हम दरकार a the coefficient 1 2 2 minus 3 b दरकार beta is हमारा 3 minus 1 and answer is your x x1 x2 right. So first of all you find a 1 and 2 2 minus 3 that is your minus 3 into the 4 that is minus 7 which is not equal to 0. Then you can proceed for your cofactors. Once it the 0 हेलान पहले हमें cofactor बाहर करना है. Okay, what are the cofactors? C11
यार कोफैक्टर এটা লিখো it will be -3 C12 এটা লিখো এটা রইবো -2 হবে রিমেম্বার বিকজ 1 2 3 होची then C21 এটা লিখো 2 ଅଛି but 21 টা এটা होची माइनस হবে then C22 এটা ইভেন গলা so it will be 1 therefore the cofactor matrix is your -3 -2 -1 okay then हमें एडजॉइंट बाहर करिया एडजॉइंट बाहर करके तार वैल्यू बाहर करिया एठी मैट्रिक्स रो मल्टीप्लिकेशन होची तो माने ऑलरेडी +2 फर्स्ट ईयर रे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी दिबो तो यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दैट गोटे थरा हमरो मल्टीप्लाई होची छोटिया मल्टीप्लिकेशन गोटे होची so you have to go for that so a transpose that is your cofactor matrix ro adjoint a is equal to आपको ट्रांसपोज कर लो -3 -2 देबे -3 -2 एटा किसी बदले बनी देन -2 1 then a inverse 1 by determinant a into z a inverse is equal to 1 by -7 into -3 -2 1 one thing you should remember ए जो -7 ता एठी आसला ताको हमें नबानी भितर ओके एटा हमें भितर को नबानी बाहर काटिबो देन x is equal to a inverse of b x कहले हमरा एते दुईटा अननोन वेरिएबल अछि सो x1 और x2 रहइबो देन a inverse 1 by -7 -3 -2 -2 1 into b is your 3 -1 okay so now it is the multiply of x1 x2 is equal to this one into this one okay so you will have -3 into 3 -9 -2 -1 that is plus 2 -2 into 3 -6 1 into देखो गुणिला बेले एटार फर्स्ट रो को एटार कॉलम गोटे ही कॉलम अछि सेते फर्स्ट कॉलम बा गोटे कॉलम को मल्टीप्लाई होछि तो -3 की ए 3 से तो -3 3 जा -9 -2 -1 गुणी की +2 हो गला सिमिलरली -2 एटा अछि आकु 3 रे गुणा -6 है 1 -1 that is -1 okay so it becomes -1 by 7 -7 so x1 x2 is equal to एठी हमें ए -7 ता भीतर को नहीं दिबा -7 by 7 this is equal to 1 1 now x1 is equal to 1 and x2 is equal to 1 so एठी x1 x2 बीटा जको मान असला by replacing here you can check your answer okay so this is all about your matrix inverse method actually हमरो remember one thing last class रे कहै दिली एबे भी कहू exactly a type रो problem आसीबो नाही प्रोसीजर फॉलो करो प्रोसीजर फॉलो करले ऑटोमेटिकली हमर सॉल्यूशन भी हे जे ओके सो सेकंड ऑर्डर तो आसीबो थर्ड ऑर्डर ही आसीबो तीनटा अननोन वेरिएबल ही आसीबो सो तीनटा अननोन वेरिएबल्स हमें कंटिन्यू करबा सो दिस इज योर बीटा अननोन वेरिएबल यू कैन राइट these things okay लिखि दियो okay okay now move ebe
गोटे क्वेश्चन देवी तुम मान को राइट by solving matrix inverse method तमाने मोर मोबाइल वीडियो बार और तर फोटो बाहर करके व्हाट्सएप रे यू विल सेंड ओके ट्राई करो मैक्सिमम पिला करिया पे क्वेश्चन ता दउची जस्ट केते जण रिस्पोंड करछथि आई वांट टू नो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड रे हमरो केतेटा पिला बुझी पारिले तो मु नेक्स्ट क्लास रे एटा कंप्लीट करिवि तो ता पूर्व तमाने केते जण रिस्पोंड करिकि आरो आंसर पठौछो आई वांट टू सी ओके सो सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड दिस इज योर होम टास्क ओके अगेन तमाने गोटे दिन मिलियो वीडियो आज अपलोड हला माने आज ही तमाने पठे दो अदरवाइज टुमारो आई विल कंप्लीट दिस वन किछि जनरली कांसेप्ट आईडिया हबनी आई वांट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो ओके सो सेकेंड ईयर पिला माने जो माने वाच करछंती जे फॉलो वाला प्रोसीजर से माने व्हाट्सएप रे आंसर टा करके फोटो बाहर करके यू शुड सेंड टू मी मते पठा ओके दिस इज योर क्वेश्चन 2x1 3x2 2x3 is equal to 2 10x1 plus 3x2 plus 4x3 is equal to 16 3x1 plus 6x2 plus 2x3 is equal to okay this is your question given to you you have to solve this one and send to me okay thank you have a nice day okay